Government of India Act of 1919. On August 20, 1917, British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India. So, August 20, 1917, British government declared for first time its objective that its objective was the gradual introduction of responsible government in India. The introduction of responsible government in India. Government of India Act of 1919 was thus enacted, which came into force in 1921. This act is also known as Montagu-Chelmsford reforms. Montagu-Chelmsford reforms. Montagu was Secretary of State. Montagu Secretary of State है and Lord Chelmsford Viceroy of India है. Montagu Secretary of State है. 1990 में अगस्त 20, 1917 British government declared for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India. Responsible government in India. The feature of this act were also follow. It provided for the classification of all subjects of administration into two categories. Provided for the classification of all subjects of administration into two categories. Namely the central subject and provincial subjects. This classification was done by devolution rules framed under the Act. These rules facilitated the delegation of authority from the center to the provinces. In this way, the Act relaxed the central control over the provinces. The center and provincial legislators were authorized to make laws on their respective list of subjects. However, the structure of government continued to be centralized and unitary. 1919. It further divided the provincial subjects into two parts, transferred and reserved. पहले तो डिवाइडेड किया सेंटर टू प्रोविंसेस, सेंट्रल सब्जेक्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट. फिर further divided provincial subjects into two parts, transferred and reserved. Transfer subject included public. Transfer subject में क्या क्या थे? Public, health, education, local self government, agriculture. While the reserved खुद के लिए रख लिया. reserved में क्या किया? आपके पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस. तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट में आपके हेल्थ दे दी, एग्रीकल्चर दे दिया, एजुकेशन दे दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे दिया. रिजर्व सब्जेक्ट में खुद के पास पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, प्रिजन, लैंड रेवेन्यू एंड फाइनेंस रख लिया. द ट्रांसफर सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द ट्रांसफर सब्जेक्ट वर टू बी administered by governor with the aid of ministers responsible to the legislative council. ठीक है. The reserve subject on the other were to be administered by the governor. Transfer subject were administered by the governor with the aid of minister responsible for legislative council. और reserve subject है वो administered by the governor and his executive council without being responsible to legislative council. तो executive council देखेगी governor and executive council तो देखेगी reserve subject, और governor and legislative council देखेगी transfer subject. Legislative council, executive council. Without being that this dual scheme of governance, also known as dual scheme of governance known as diarchy. A term derived from the Greek word diarch, which means double rule. So transfer subject was
the administered by the governor and minister responsible for legislative council minister. Governor and legislative council minister. Reserve subject were administered by governor and executive council ministers. ठीक है. The experiment was largely unsuccessful. It introduced for the first time bicameralism. It's for the first time bicameralism and direct election in the country. बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया और डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया. दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस्ड बाई बाईकैमरल. तो इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था ये रिप्लेस्ड बाई बाईकैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस. एक अपर हाउस होता है काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली. अपर हाउस तो है काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली. लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दिया जहाँ पे ट्रांसफर सब्जेक्ट थे और रिजर्व सब्जेक्ट थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था और काउंसिल ऑफ द स्टेट अपर हाउस कर दिया. द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज वाज चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन से वो. तो बाईकैमरलिज्म आपके 1919 में आया. ठीक है, डायर की बाईकैमरलिज्म. ठीक है, ये 1919 में आया. इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 member of Viceroy's executive council other than commander in chief were to be Indian. 3 of 6 member of Viceroy's executive council में पहले लेजिस्लेटिव में 4 इंडियंस कर दिए थे नॉन ऑफिशियल. ठीक है, नाउ अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर were to be Indian. It extended the principle of communal representation by providing separate electorates for Sikh, Indian, Christian, Anglo-Indians and European. तो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिक्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दिया, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दिया, एंग्लो इंडियंस के लिए एंड यूरोपियंस के लिए. ठीक है, तो 6 इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दिया. कम्युनल जो उसको बोला जाता है किसको, आपके फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है क्योंकि उसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स का कंसेप्ट लेके आए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. और मुस्लिम मेंबर्स वर भी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स. ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो को फादर हो. तो ये कब हुआ था लॉर्ड मिंटो वाला मोर्लिमेंटो रिफॉर्म्स इन काउंसिल एक्ट 1909. ठीक है, और अब 1919 में आपके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया, 6 को भी दे दिया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिया, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन. इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड अदर क्वालिफिकेशन. तो फ्रेंचाइजी मिल गई जिनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है और टैक्स है. इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन. न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन. लंदन के अंदर में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया की ऑफिस बना दी एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस हियर दो परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस, कुछ फंक्शंस उसको करने के लिए बोल दिए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर करता है. ठीक है, It provided for the establishment of Public Service Commission. पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा अब. ठीक है, Hence a central service commission was set up. A central public service commission was set up in 1926 for recruiting civil servants. Separated for the first time provincial budgets from the central budget and authorized the provincial legislature to enact their budgets. फर्स्ट टाइम जो प्रोविंशियल बजट है उसको सेंट्रल बजट से अलग कर दिया. प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम सेंट्रल बजट एंड ऑथोराइज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट्स. ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर द
Provided for the appointment of a statutory commission to inquire into and report on to its working after 10 years of its coming into appointment of statutory commission to inquire into and report on its working after 10 years of its coming on into force. Provided for the appointment of statutory commission to inquire into report on its working after 10 years of coming into force. Propose the establishment of Chamber of Princes, also known as Narendra Mandal. Establishment of Chambers of Princes, known as Narendra Mandal. Chamber of Princes, जिसको नरेंद्र मंडल बनाएंगे. Chamber was inaugurated in 1921. It consisted of 120 members, 120 princes of 108 states and 12 representatives of other states. Headed by Viceroy, Governor General. It facilitated the consultation and discussion on the matters of common interest. फिर साइमन कमीशन बनाया 1919. फिर 1927, November 1927, 2 years before the schedule. British government announced the appointment of a 7-member. British government 2 years before the schedule announced the appointment of 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon. अंडर दी 2 साल पहले 1927 में साइमन कमीशन आ गया था. 1927 साइमन कमीशन, ठीक है. Announced the appointment of 7-member statutory commission under chairmanship of Sir John Simon to report on the condition of India under its new constitution. All the members of commission were British. All the members of commission were British, and hence all the parties boycotted commission. The commission submitted its reports in 1930. And recommended the abolition of diarchy. Extension of responsible government in provinces. Establishment of Federation of British India. And princely state. Continuation of communal electorate. Continuation of community and so on. To consider the proposals of commission, the British government convened 3 roundtable conference. To consider the proposals of commission, British government convened 3 roundtable conference of representatives of British government, British India and India principally. Representatives of British government, British India and Indian princely state. On the basis of discussion, a white paper on constitutional reforms. Was prepared and submitted for the consideration of Joint Select Committee. Joint Select Committee of British Parliament. The recommendation of this committee were incorporated with certain changes in the next Government of India Act. Next Government of India Act 1930. Communal Award. In August 1932, Ramsay MacDonald, the British Prime Minister, announced a scheme of representation of minority. British Prime Minister announced a scheme of representation of minorities, which came to be known as Communal Award.
The award not only continued separate electorates for the Muslim, Sikhs, Indian, Christians, Anglo-Indians, and Europeans, but also extended it to depressed classes, scheduled classes. So Gandhiji was distressed over this extension of principle of communal representation to depressed classes and undertook a fast unto death in Yerwada jail. Gandhiji. In Yerwada jail, Pune, to get the award modified. At last, there was an agreement between Congress and Dr. B.R. Ambedkar, leader of depressed classes. The agreement known as Pune Pact retained the Hindu joint electorate and gave reserved seats to depressed classes. British government accepted the Pune Pact and modified the communal award in respect to depressed classes, scheduled caste. Scheme of representation of minority, which came to know the award not only also extended to the depressed. This means that the provision of separate electorate for the depressed was dropped from the scheme of representation and contained in communal award. Subsequently, the provision of Pune Pact were incorporated in the next Government of India Act. In other words, the composition of central and provincial standard 13 was based on modified criminal award. Government of India Act 1935. The act marked a second milestone toward a completely responsible government in India. It was lengthy, detailed document having 321 sections and 10 schedules. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल लेंथी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर फॉलो इट प्रोवाइडेड फॉर द establishment of all India Federation consisting of provincial and princely state as units. The act divided the power between center and units in terms of three lists. Federal list for center with 59 items, provincial list for provinces 54 items, and concurrent list for both with 36 items. Residuary power were given to the Viceroy, Governor General. However, the Federation never came into being as the princely states did not join it. Federation never came into federal lists for center, lists for provinces, and concurrent lists. Federation never came into being as the princely states did not join it. It abolished diarchy in provinces and introduced provincial autonomy. In this place, the provinces were abolished diarchy in provinces and introduced provincial autonomy in its place. The provinces were allowed to act as autonomous units. Of administration in their defined space. Moreover, the act introduced responsible government in provinces. This is the governor was the governor was required to act with the advice of minister. Governor was required to act with advice of ministers responsible to the provincial legislature. This came into effect in 1937 and discontinued in 1939. It provided for the adoption of diarchy at the center. It provided for the adoption of diarchy
at center. Consequently, the federal subjects were divided into reserved and subject and transfer subject. However, this provision act did not come into operation at all. Introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. Bicameral 6 out of 11 provinces. The legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, United Provinces were made bicameral, consisting of legislative council, upper house, and legislative assembly. New council house and legislative assembly, lower house. However, many restrictions were placed on them. It reserved a certain number of general seats for depressed classes. Scheduled class, and extended the special representation to women and labor workers. Depressed class और women के लिए भी special representation. Abolished the Council of India established by the Government of India Act of 1858. The Secretary of State for India was provided with a team of advisors. Abolished Council of India established by the Government of India Act 1858. Secretary of State for India was provided with team of advisors. It extended franchises. About 14% of total population got the voting right. 14% of total population got voting rights. Provided for the establishment of Reserve Bank of India बनाया. Basement to control currency and credit of the country. It provided for the establishment of not only a federal public service commission but also a provincial state council and joint public service commission for two or more provinces. It provided for the establishment of federal court, which was set up in 1937. Separated Burma अलग हुआ 1935 में. बर्मा को अलग किया गया. नाउ म्यांमार फ्रॉम इंडिया. क्रिएटेड टू न्यू प्रोविंसेस ऑफ उड़ीसा एंड सिंध. Provided for safeguards to protect the interest of minorities. Provided for the establishment of Federal Railway Authority to look after administration of railways. Provided for the appointment of Auditor General of India to audit the accounts of Federation and provinces. Auditor General भी 1935 में आया. ठीक है. Indian Independence Act of 1947. On February 20, 1947, British Prime Minister Clement Attlee declared 20 फरवरी 1947 को that British rule in India would end by June 30, 1948. After which the power will be transferred to responsible Indian hands. This announcement was followed by agitation by the Muslim League. Demanding partition ठीक है of the country. Again on फिर फरवरी 20, 1947 और again on June 3, 1947, the British government made it clear that any constitution framed by the Constitutional Assembly of India formed in cannot apply to those parts of country which are unwilling to accept it. That any constitution framed by Constitution of Assembly of India formed in 1946 cannot apply to
those parts of country which were unwilling to accept it. On the same day, June 3, 1947, Lord Mountbatten, the Viceroy of India, put forth partition plan. Partition plan, June 3, 1947. The plan was accepted by the Congress and Muslim League. Mountbatten plan. When accepted by the Muslim League, June. Immediate effect was given to plan by enacting the Indian Independence Act. Indian Independence Bill was introduced in British Parliament on July 4, 1947, and received the royal assent on July 18, 1947. The act came into force on August 15, 1947. Indian Independence Act of 1947 ended British rule in India. आज़ादी सा महसूस हो रहा है. It ended the British rule in India and declared India as independent and sovereign state. Declared India as an independent and sovereign state from August 15, 1947. The British rule in India and declared India as an independent and sovereign state. Provided for the partition of India. Partition of India हो गया. Creation of two independent dominion of India and Pakistan. Two independent dominions of India and Pakistan with right to cede from the British Commonwealth. With right to cede from British Commonwealth. Abolish the office of Viceroy, and provided for each dominion Governor General who was a Viceroy, and provided for each dominion Governor General who was be appointed by the British King on the advice of Dominion Cabinet. His Majesty government in Britain was to have no responsibility with His Majesty government in Britain, no responsibility with Government of India or Pakistan. It empowered the constituent assemblies of two dominion to empowered constituent assembly of two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nation, and to repeal any act of British Parliament, including the Independence Act itself. It empowered the constituent assemblies of both dominions to legislate for their respective territories till the new constitutions were drafted and enforced. No act of British Parliament was passed. No act of British Parliament passed after August 15, 1947 was to extend to either of new dominions unless it was extended by the law of legislature. It abolished the office of Secretary of State for India, transferred his function to Secretary of State for Commonwealth Affairs, transfers his functions to Secretary of State for Commonwealth Affairs, proclaimed the lapse of British paramountcy over Indian princely states and treaty relations with tribal areas from August. Granted freedom to Indian princely states either to join the Dominion of India or Dominion of Pakistan or to remain independent. Granted freedom to Indian princely states either to join Dominion of India, Dominion of Pakistan, or to remain independent. Provided for the governance of each the dominions and provinces by the government in the Act of 19 till the new constitution was framed. The dominions and the provinces by the government of India till new constitution was framed. Hence were however authorized to make no modification in the Act. It deprived the British monarch
deprived British monarch of his right to veto bills or ask for reservation of certain, but this right was reserved for the Governor General. Reserved for Governor General. The Governor General would have full power to assent to any bill in the name of His Majesty. It designated the Governor General of India and the provincial governors as constitutional heads of the states. Designated Governor General of India and provincial governors as constitutional nominal heads of state. They were made to act on the advice of respective council of ministers in all matters. Dropped the title of Emperor of India from the royal titles of King of England. It discontinued appointment to civil services and reservation of posts by Secretary of State for India. The member of the civil services appointed before August 15% will continue to enjoy all benefits that they will entitled to till that time. Members of civil service appointed at the stroke of midnight of 15 August 1947, British rule came to an end. And power was transferred to two new independent dominions, India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of New Dominion of India. Lord Mountbatten became first Governor General of New Dominion of India. He swore in Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister. Of independent India. The Constitutional Assembly India formed in 1947 became the Parliament of Indian Dominion. Constitution Assembly became the Parliament of Indian Dominion. The member of both interim government 1946 and first cabinet of independent India 1947 are mentioned in trigonometry. The boundaries between two dominions were determined by Boundary Commission headed by Radcliffe. Pakistan included the provinces of West Punjab, Sindh, Balochistan, East Bengal, Northwestern Frontier Provinces and District of Sialhat in Assam. The referendum in the Northwestern Frontier Provinces and Sialhat was in favor of Pakistan. इंटरिम गवर्नमेंट में जवाहरलाल नेहरू अपने वाइस प्रेसिडेंट थे. 1946 की बात है ये. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल थे. एक्सटर्नल अफेयर्स भी था इनके हाथ में. सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके होम मिनिस्टर थे. राजेंद्र प्रसाद आपके फूड एंड एग्रीकल्चर में थे. डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज़ में थे. जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे. ठीक है. सरदार बलदेव सिंह डिफेंस में थे. सरदार बलदेव सिंह डिफेंस में. C.H. भाभा आपके वर्क्स माइंस पावर में थे. लियाकत अली खान फाइनेंस में थे. ठीक है. उसके बाद फाइनेंस थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पे. अब्दुल राब निस्तार पोस्ट और एयर में थे. ठीक है. असफ़ अली रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट में थे. C. राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स में थे. चुंद्रीगर कॉमर्स में थे. गजनागर अली खान हेल्थ में थे. जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ में थे. ठीक है. एक बार और देख लेते हैं. जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल थे. एक्सटर्नल अफेयर्स भी था और कॉमनवेल्थ रिलेशंस था. सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग में थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके फूड एग्रीकल्चर में थे. डॉक्टर जॉन मथई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज में थे. जगजीवन राम लेबर में थे. सरदार बलदेव सिंह डिफेंस में थे. C.H. भाभा वर्क्स माइंस एंड पावर में थे. लियाकत अली खान फाइनेंस में थे. अब्दुल राब निस्तार पोस्ट एंड एयर में थे. असफ़ अली रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट में थे.
सी राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स में थे। आई चुंदरीगर कॉमर्स में थे। गजनाफर अली खान हेल्थ में थे। जोगेंद्रनाथ मंडल लॉ में थे। द मेंबर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वाज मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। द वाइसरॉय कंटिन्यू टू बी हेड ऑफ द काउंसिल बट जनरल वाज डेजिग्नेटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। ठीक है, तो ये वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ही मेंबर थे और इसमें वाइसरॉय को हेड ऑफ द काउंसिल था और जवाहरलाल नेहरू आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल हो गए। फिर जब फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनी 1947 में, जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, एक्सटर्नल अफेयर्स का दे दिया, कॉमनवेल्थ रिलेशंस का दे दिया, साइंटिफिक रिसर्च का दे दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के रहे और स्टेट्स के भी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद आपके फूड एंड एग्रीकल्चर के रहे और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एजुकेशन में आ गए। पहले एजुकेशन एंड आर्ट्स था सी राजगोपालाचारी, फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को अलग से एजुकेशन दे दिया। डॉक्टर जॉन मथई को रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट दे दिया। ठीक है, पहले इंडस्ट्री एंड सप्लाई था, अब रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट दे दिया। आर के सांदमुक्का चेट्टी फाइनेंस दे दिया। पहले फाइनेंस आपके लियाकत अली खान थे, अब आर के सांदमुक्का चेट्टी। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आ गए अब आपके लॉ में। ठीक है, उसके बाद जगजीवन राम को तो लेबर ही था, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस ही था। अब यहाँ पे आपके राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ में डाल दिया। ठीक है, सी एच बाबा तो कॉमर्स में आ गए। सी एच बाबा पहले वर्कमैन ऑफ पावर में थे। रफ़ी अहमद किदवई को कम्युनिकेशन दे दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपके इंडस्ट्री एंड सप्लाई दे दिया और वी एन गडगिल को वर्कमैन पावर दे दिया। अपन न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, making of the constitution. Demand for a constituent assembly is one in 1934 the idea of constitution assembly of India. 1934 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया आया था, वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई एमन रॉय। एमन रॉय ने फर्स्ट टाइम इसको किया था। पायनर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, कम्युनिस्ट मूवमेंट जो इंडिया में आया था वो एमन रॉय के द्वारा आया था। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड, और फिर 1935 में आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए आपके। ठीक है, एक मिनट शॉर्पनर की तरफ से ठीक है। In 1938, Jawaharlal Nehru on behalf of INC declared that the constitution of free India must be framed without outside interference। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया का विदाउट किसी भी बाहर की इंटरफेरेंस के बिना बाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे बनेगा, elected on the basis of adult franchise. This view was endorsed and reiterated by the INC by passing a resolution in 1939. The demand was finally accepted in principle by the British government in British government in what is known as August Offer of 1940. In 1942, Sir Stafford Cripps
1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, a member of cabinet, came to India with a draft proposal of British government on the framing of independent constitution to adopted after World War II. Draft proposal British government on the framing of independent constitution to be adopted after World War II. The Cripps proposal were rejected by the Indian Muslim Leagues. Cripps proposal were rejected by Indian Muslim League, which wanted India to be divided into two autonomous states with two separate constitutions. Finally, a cabinet mission was sent to India. पहले एक आया ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ कैबिनेट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगस्त 1947 मेंबर ऑफ कैबिनेट केम टू इंडिया विद ड्राफ्ट प्रपोजल. फिर कैबिनेट मिशन को भेजा गया, वॉज सेंट टू इंडिया. व्हाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इट पुट फोर्थ अ स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग. कैबिनेट मिशन कंस्टिट्यूएंट 3 मेंबर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर. Lord Patrick Lawrence arrived in India on March 24, 1946. कैबिनेट मिशन तो 1946 में है. March 24, 1946. कैबिनेट मिशन published its plan in May 16, 1946. Composition of Constitution. The Constituent Assembly was constituted in November 1946. नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी अंडर द स्कीम फॉर्मेट बाई कैबिनेट मिशन प्लान. मई में कैबिनेट मिशन ने अपना प्लान पब्लिश किया और नवंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. द फीचर ऑफ स्कीम टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389. जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 389 थी. ऑफ दिस 296 सीट वर अलाउड टू बी ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू बी प्रिंसली स्टेट. जिसमें 296 सीट तो आपके ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 सीट्स आपके प्रिंसली स्टेट्स की थी. आउट ऑफ 296 अलाउटेड ब्रिटिश इंडिया, 292 मेंबर्स वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द 11 गवर्नर प्रोविंसेस एंड 4 फ्रॉम द 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, 1 प्रोविंस. जो 296 सीट्स अलॉटेड थी ब्रिटिश इंडिया को, उसमें से 292 तो आपको 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस लेनी थी और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से लेनी, 1 फ्रॉम ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स वर टू बी अलाउड सीट्स इन प्रोपोर्शन, बराबर प्रोपोर्शन में प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट. Seats allocated to each British provinces were to be divided among 3 principal community. जो भी सीट ब्रिटिश प्रोविंसेस में अलोकेट होगी वो डिवाइडेड होगी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम सिख, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन. जैसी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से. The representatives of each community were to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly and voting was to be by these includes Madras, Bombay, UP, Bihar, Central Provinces, Orissa, Punjab, Northwestern Frontier Provinces, Sindh, Bengal and Assam. और जो ये है आपके 11 गवर्नर प्रोविंसेस एंड 4 चीफ कमिश्नर है. दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर है. कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान. मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न, सिंध, बंगाल, असम. चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस है दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान. Method of proportional representation by means of single transferation of votes. ठीक है, single transferation of votes. The representatives of the princely states were to be nominated by the heads of princely states. Representatives of princely state nominated by the heads of princely states. It is thus clear that the Constituent Assembly was to be partly elected
Constituent Assembly was partly elected and partly nominated body. Constituent Assembly was to be partly elected. Constituent Assembly was to be partly elected and partly nominated body. Moreover, the members were to be indirectly elected by the members of Provincial Assembly, who themselves were elected in limited franchise. The election to the Constituent Assembly for 296 seats allotted to British Indian Council were held in July-August 1946. ठीक है, 389 थे जिसमें 296 तो दे दिए ब्रिटिश इंडिया को, 93 दे दिए प्रिंसली स्टेट्स को। तो जो 296 जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में, जिसमें 292 तो आपके इसको दे दी 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस में, और 4 दे दिया आपको चीफ कमिश्नर्स जो है दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्गन, बलूचिस्तान। तो इनका जो इलेक्शन हुआ आपके जुलाई अगस्त 1946 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली। द मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली एंड द स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडियन गॉट द रिमेनिंग 15। हाउएवर द 93 सीट्स अलॉटेड टू प्रिंसली वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रिंसली स्टेट ने पार्ट नहीं लिया। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people on the basis of adult franchise, the assembly comprised representative of all sections of Indian society: Hindu, Muslim, Sikh, Parsi, Anglo-Indian, Hindu, Muslim, Sikh, Parsi, Anglo-Indian, Indian Christian, SC, ST, including women of all these sections. The assembly included all important personalities of India at that time, with the exception of महात्मा गांधी। तो जो भी बड़े बड़े थे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, उनको इंक्लूड कर दिया महात्मा गांधी के वाला। द allocation of seats in Constituent Assembly, the results of election to the Constituent Assembly, the community-wise representation in the Constituent Assembly, and the women member of Constituent Assembly are mentioned in the result of Constituent Assembly, community-wise representation, Constituent Assembly, वुमेन मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट। अब क्या है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 1946। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो आपके 9 दिसंबर 1946 को होती है। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की वही राग है, अलग बनाओ अलग बनाओ। The meeting was thus attended by only 207 members। ठीक है, 273 ये जीते थे, 296 तो टोटल थे ही थे, जिसमें 73 ये जीते थे और कुछ ये भी नहीं है। तो टोटल जो मेंबर आए वो ओनली 207 मेंबर आए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर, वॉज elected as a temporary chairman of the assembly following the French practice। जो सीनियर होता है, जो ओल्ड मेंबर होता है, उसको ही वो बनाया जाता है। एंड JB कृपलानी फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस। ऑन 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुई। ऑन December 11, 1940 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द असेंबली। और फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को आपके परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। उससे पहले सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। Similarly, on the January 25